Hey there, welcome back to TechWise AI. Let me ask you something. Do you feel like everyone is talking about AI these days, but no one explains it in simple words? You hear about AI in news headlines, job posts, and even when scrolling social media. But what really is AI? Is it robots taking over the world? Or is it something we use every single day without even realizing it? Stay with me because today I'm going to break down what AI actually is, how it works, and share some mind blowing examples that will surprise you. But before we get into it, let me tell you something personal. When I first heard about AI, I thought it was only for engineers or big tech companies. But over time, I realized that AI is something I use in my daily life without even thinking about it. For example, this morning I used AI to write my daily to do list faster with a smart AI writing tool. Check the fastest route to work on Google Maps, avoiding traffic jams. Reply to important emails quickly with AI generated suggestions. And in the evening, I'll probably use AI again to learn something new or create valuable videos for this channel to enrich you with knowledge. I realized AI was making my life so much easier. And that's when I thought, why am I keeping this as a secret? That's why I created TechWise AI, because I want to share these secrets with you so that you can also use AI to simplify your life, save time, and even impress people with your tech knowledge. And here's my promise, by the end of this video, you'll not only understand AI clearly, you'll also start noticing how it's helping you every single day. So, let us understand what is AI. Imagine for a moment you're sitting at home asking Alexa to play your favorite song, or using Google Maps to reach a new cafe without getting lost. Feels normal, right? But what's really happening behind the scenes? AI stands for artificial intelligence. In the simplest words, it means machines or computer programs that can do things which normally require human intelligence. But wait, does that mean machines are thinking like humans? Not exactly. But they can do smart tasks like understanding what you say, recognizing faces, making decisions, and even learning from experience. For example, have you ever used Google Maps and wondered how it always knows the fastest route, even when there's sudden traffic? That's AI at work, analyzing traffic data in real time and suggesting the smartest path. Or think about Netflix. Have you noticed how it always seems to recommend shows and movies you actually want to watch? That's AI learning your preferences based on what you've watched before. Here's another everyday example: your email spam filter. It quietly learns which emails are junk and keeps them out of your inbox without you doing anything. Pretty cool, right? But how does AI actually do all this? Let's break it down in simple words. At its core, AI uses data, huge amounts of data. It finds patterns in that data to make decisions or predictions, just like our brains do when we learn from experiences. Imagine you show an AI program thousands of pictures of cats and dogs, and you tell it which is which. Over time, it learns the difference and can tell you whether a new picture is a cat or a dog
just by comparing it to what it has learned before. This is called machine learning, a type of AI where machines learn from data and get better over time without being programmed for every tiny detail. But wait, there's something even cooler. There's another type of AI called deep learning. It uses networks similar to our brain to process complex data and recognize patterns on a much deeper level. This is what allows self driving cars to recognize traffic lights, stop signs, and pedestrians instantly to make decisions safely on the road. And here's where it gets even more exciting. AI isn't just about identifying cats, dogs, or traffic signs. Today, it's doing things that were once only possible in science fiction. For example, creating videos, AI tools can now generate entire videos from text prompts or simple scripts. Imagine typing out your idea and within minutes having a professional looking video ready for your YouTube channel. Designing images and graphics. Have you seen AI art generators like DALL-E or Midjourney? You can type a futuristic city at sunset with flying cars and it creates a stunning original image in seconds. Practical. Writing content and captions, tools like ChatGPT can draft your Instagram captions, YouTube descriptions, and even entire blogs with human like language and creativity. Convenient. Editing photos effortlessly. AI apps can remove backgrounds, enhance lighting, and touch up your selfies instantly without you needing design skills. Helpful. Personalizing learning. Some AI tools act as smart tutors, understanding what you find difficult and teaching you in a way that suits your style. Surprised. Creating music and beats. Yes, AI can now compose original music based on your mood or genre preference. Isn't that mind blowing? Empowering. AI is literally empowering creators, entrepreneurs, students, and everyday people to do things faster, smarter, and better. Engaging. Is this making sense so far? Drop a quick yes, it does in the comments below so I know you're with me. Anticipatory. Now let's look at some everyday examples of AI that might surprise you. Voice assistants like Siri, Alexa, and Google Assistant. They understand your commands and respond smartly. Face recognition to unlock your phone in a split second. Shopping websites suggesting products you might like. Banks using AI to detect fraud and keep your money safe. Video editing apps that cut silences, add captions, and sync audio automatically. AI chatbots on websites helping you 24/7 without human intervention. And yes, YouTube recommendations like this video you're watching right now. That's AI working to keep you engaged with content you love. Now you might be thinking, okay, but why should I care about AI? Here's why. Because AI is not just for tech companies or engineers. It's becoming a part of every job, every business, and every home. Knowing what it is and how it works will give you an edge. It will help you use it better, make smarter decisions, and stay ahead in your career. Whether you want to create better videos, automate boring tasks, grow your business, or simply stay updated with the world, AI is your secret weapon. And that's exactly why I created TechWise AI to make technology simple, practical, and powerful for everyone. Before you go, tell me in the comments which AI example surprised you the most today. And if you found this video helpful, don't just leave. Hit that subscribe button right now because in my upcoming videos, I'll be sharing many tips that will not only save you time, but also boost your productivity and simplify your life in ways you never imagined. Thanks for watching, and remember, technology is here to make your life easier, not harder. Let's explore it together. See you in the next video.
नमस्ते दोस्तों, टेकवाइज एआई में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आजकल हर कोई एआई की बात कर रहा है, लेकिन कोई इसे आसान शब्दों में समझाता ही नहीं? आप एआई के बारे में न्यूज़ में, जॉब पोस्ट में और सोशल मीडिया पर सुनते हैं, लेकिन असल में एआई है क्या? क्या ये रोबोट्स हैं जो दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं? या ये कुछ ऐसा है जो हम रोज बिना जाने इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एआई क्या होता है, कैसे काम करता है और कुछ ऐसे उदाहरण जो आपको चौंका देंगे। लेकिन उससे पहले एक पर्सनल बात बताता हूँ। जब मैंने पहली बार एआई के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ इंजीनियर्स और बड़ी टेक कंपनियों के लिए है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि मैं भी एआई रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, बिना सोचे। आज सुबह ही मैंने एआई का इस्तेमाल किया। अपना टू डू लिस्ट जल्दी लिखने के लिए एक स्मार्ट एआई राइटिंग टूल से, गूगल मैप्स पर ट्रैफिक से बचकर तेज़ रास्ता निकालने के लिए, ज़रूरी ईमेल्स के जवाब जल्दी देने के लिए एआई सजेशंस से, और शाम को भी मैं एआई का इस्तेमाल करूँगा, या तो कुछ नया सीखने के लिए या फिर आपके लिए एक नई वीडियो बनाने के लिए जो आपकी नॉलेज बढ़ाए। तब मुझे एहसास हुआ ये तो मेरी ज़िंदगी को कितना आसान बना रहा है, तो मैं इसे सीक्रेट क्यों रखूं? इसीलिए मैंने बनाया टेकवाइज एआई, ताकि मैं ये सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी एआई का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान, तेज़ और स्मार्ट बना सकें। और मेरी एक प्रॉमिस सुन लीजिए, इस वीडियो के अंत तक आप एआई को साफ-साफ समझ जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि एआई आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे मदद कर रहा है। तो चलिए समझते हैं एआई क्या है। सोचिए, आप घर बैठे एलेक्सा से अपना पसंदीदा गाना चला रहे हैं या गूगल मैप से किसी नए कैफ़े का रास्ता ढूंढ रहे हैं। नॉर्मल लगता है ना? लेकिन पीछे क्या हो रहा है? एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। साधारण शब्दों में कहें तो ये मशीनें या कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो वो काम कर सकते हैं जो आम तौर पर इंसानी दिमाग करता है, जैसे समझना, सोचना, सीखना। पर क्या इसका मतलब है कि मशीनें इंसानों की तरह सोचती हैं? नहीं, लेकिन वो स्मार्ट काम कर सकती हैं, जैसे आपकी बात समझना, चेहरे पहचानना, फैसले लेना और अनुभव से सीखना। उदाहरण, गूगल मैप्स का तेज़ रूट बताना या नेटफ्लिक्स का आपके पसंद के शोज सजेस्ट करना, ये सब एआई की वजह से होता है। या आपका ईमेल स्पैम फिल्टर, वो चुपचाप सीखता है कौन सा ईमेल बेकार है और आपको परेशान होने से बचाता है। तो एआई ये सब करता कैसे है? सीधा जवाब है डेटा। एआई ढेर सारे डेटा को एनालाइज करता है और पैटर्न्स ढूंढता है। इसी से वो निर्णय या भविष्यवाणी करता है, जैसे हम अनुभव से सीखते हैं। सोचिए, आप एक एआई को हजारों बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कौन सी क्या है। धीरे धीरे वो समझने लगता है और नई तस्वीर देखकर बता सकता है ये बिल्ली है या कुत्ता। इस प्रक्रिया को कहते हैं मशीन लर्निंग। और एक और लेवल होता है डीप लर्निंग। ये एआई का एडवांस्ड फॉर्म है जो हमारे दिमाग जैसे नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है और जटिल जानकारी को गहराई से समझ सकता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो ट्रैफिक लाइट्स, पैदल यात्री और रोड साइन तुरंत पहचानती हैं और सुरक्षित निर्णय लेती हैं। और अब सबसे मज़ेदार बात सुनिए, आज एआई सिर्फ बिल्लियों या ट्रैफिक साइन तक सीमित नहीं है। ये काम कर रहा है जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन में दिखते थे। वीडियो बनाना, एआई अब आपके टेक्स्ट से वीडियो बना सकता है। इमेज डिज़ाइन करना, डॉली और मिड जर्नी जैसे टूल से शानदार तस्वीरें बनती हैं। लिखना, चैट जीपीटी से इंस्टाग्राम कैप्शन, ब्लॉग, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बन सकते हैं। फोटो एडिट करना, बैकग्राउंड हटाना, लाइटिंग सुधारना, सब बिना डिज़ाइन स्किल्स। लर्निंग को पर्सनलाइज करना, स्मार्ट ट्यूटर की तरह आपकी स्टाइल में पढ़ाना। म्यूजिक बनाना, एआई अब आपके मूड या पसंद के अनुसार म्यूजिक कंपोज कर सकता है। क्या ये ज़बरदस्त नहीं है? एआई आज क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स सबकी ताकत बन रहा है।
काम तेज, स्मार्ट और आसान हो रहा है। अब तक सब क्लियर है? तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हाँ, बिल्कुल। और चलिए कुछ और डेली लाइफ के एआई उदाहरण देखें। सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट आपकी बात समझकर जवाब देते हैं। फेस अनलॉक, 1 सेकंड में फ़ोन खुल जाता है। शॉपिंग वेबसाइट्स जो आपके मनपसंद प्रोडक्ट सजेस्ट करती हैं। बैंक जो फ्रॉड पकड़ते हैं और आपके पैसे सुरक्षित रखते हैं। वीडियो एडिटिंग ऐप्स जो खुद ही साइलेंस हटाते हैं, कैप्शन जोड़ते हैं। वेबसाइट चैटबॉट्स जो 24/7 आपकी मदद करते हैं बिना इंसान के। और हाँ, यूट्यूब सजेस्टेड वीडियो जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये भी एआई की ही करामात है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा लेकिन मुझे एआई से क्या लेना देना? तो सुनिए, एआई अब सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं है। ये हर नौकरी, हर बिजनेस और हर घर का हिस्सा बन चुका है। अगर आप एआई को समझते हैं तो आप बेहतर टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट फैसले ले सकते हैं और करियर में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप वीडियो बनाना चाहते हो, या बोर्डिंग काम ऑटोमेट करना, या बिजनेस बढ़ाना, या बस दुनिया के साथ अपडेट रहना, एआई आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। और यही वजह है कि मैंने बनाया टेकवाइज एआई, ताकि मैं टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान, काम की और मजेदार बना सकूं। अब जाने से पहले एक काम कीजिए, कमेंट्स में बताइए आज का कौन सा एआई उदाहरण आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और अगर ये वीडियो मददगार लगी हो तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपका समय बचाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और जिंदगी को आसान बना देंगे, जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और याद रखिए, टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं, बल्कि आसान बनाने के लिए है। तो चलिए मिलकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।